Good morning, one and all. Good morning to our 10 days International Capacity Development Program on Research in Practice. This is a 10 days international workshop organized by Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya, in collaboration with Swami Vivekananda University, Barakpur, Kolkata, West Bengal, and also in collaboration with CTPD India, Center for Teachers Professional Development. And on behalf of our respected Principal Madam, Dr. Uma Ghosh, Principal Siddhinath Mahavidyalaya, I'd like to invite all of you in the 6th day's program. Today is the 6th day of our 10 days international workshop on research in practice. So, students and the research scholars and the faculties all over India have joined today's program. I'd like to invite our today's resource person, Dr. Newton Bishwas. Now, this is the time to give brief introduction of Dr. Bishwas. Dr. Newton Bishwas did MA in History in English Literature and Education. He did PhD in Education from University of Kalyani in 2018. He has been teaching as an assistant professor at Department of Education, Gokhale Memorial Girls College, Kolkata since 2014. He is also teaching as a guest lecturer at Horichand Guruchand University, West Bengal. He was the former head of the Department of Education in Gokhale Memorial Girls College, Kolkata, and present head and in charge of Department of Education, Horichand Guruchand University, West Bengal. Dr. Biswas was a former lecturer of JRCT College of Education and JRCT College of Law. He has delivered more than 30 invited talk and special lecture and seminar and conference presentation. He has published more than 25 research review articles in different national and international journals and books. Dr. Biswas received Research Excellence Award 2020 from Institute of Scholars and Indian Icon Award in Academic Research and Development category in 2021 from National Human Rights Organization NHRO, registered by Government of India. So we are very much fortunate to have such a resourceful person among us. He is going to deliver his lecture on selection of topic in social science research. Not only that, he would also explain how to write research proposal with some examples. So now this is the time to welcome our resource person, Dr. Newton Biswas. Newton, over to you. Namaskar. Thank you, Shamustri ma'am, for inviting me on this huge platform where so many people, so many students, research scholars, and teachers from all over India, those who are present here. So once again, I would like to thank Shamustri ma'am for giving me the opportunity. At the same time, I would like to thank the principal and administrative authority of Siddhinath Mahavidyalaya, of course, Swami Vivekananda University, and Council for Teachers Professional Development. All the administrative people, those who have organized such a beautiful platform
for the upliftment of research methodology. So I would like to thank each and everyone, and I would like to wish a very good morning to all the participants, those who are present here. Well, without wasting any time, let's start the lecture on this workshop. Today we will discuss about selecting the exact topic. You know, when this is a very first thing that comes in our mind when we begin our research work. So without wasting any time, I'm directly going to my presentation, and maybe when I will be sharing the screen, maybe some network issues, that's why I am switching off my video. I'm switching off my video. I will be sharing my screen. Okay, so let's start. Yeah, someone is saying that voice is not coming. Am I audible? Am I audible? Yes, you are audible. Absolutely no problem. Okay. There was a message. Someone is saying that voice is not audible. Anyway, thank you so much. Let me share my screen. Okay. I think the screen is also visible to all of you. Yes, Right. visible. Okay, fine. Thank you so much. Thank you so much for the feedback. Okay, so the very first thing, selection of topic in social science research. We will be discussing about social science research, selection of topic. This is a very important part. I think English is the better medium. If any problem, the people from all over the country, so I will be... Sorry? Unmute yourself. Yeah. Only the resource file person will be speaking, and I will Okay. remove you if you continue speaking. Please stop. Newton, please do it. I have to remove some most versatile like that. I have to remove. Okay. Because I cannot unmute. That's why I have to remove. No problem. I have no option. Just wait. Yes, I have removed him. Okay. You Thank can you, ma'am. continue now. Thank you, ma'am. So I will be bilingual. I will be speaking in Hindi and English. Okay, because there are so many people from all over the country is present here. तो ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज. So first of all, I would like to share a very important aspect. Quite shocking, but this is the fact of social science research in our country. Few years back, there was a report, and there was also reporting in Times of India, where it has been said that India has a share of 1.6%, only 1.6% global share in social science research. Okay, so think about this, that India is a huge country. There are so many research scholars, there are so many research going on, but if we see in a global context, हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1.6% शेयर है इंडिया का, जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल लेवल research. On the contrary, think about China. China, they have 5% share in social science research among 160 countries. So there are so many universities in India, so many research work is going on. In spite of everything, somewhere we failed to match the global standard. So if we see that National Education Policy 2020,
यहाँ पे भी क्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया गया है. Everyone is talking about that we will have to increase the quality of research. So how to increase the quality of research? We'll have to think and think and think and think. Research is all about thinking. You know, the more we think, the more our brain will be sharp. The less we think, will become dull. You know, very simple theory. One biologist, Sir John Lamarck, has given a nice theory. The theory of use and disuse. If we use our brain, it will become sharper and sharper. If we don't use, it will become dull. Okay, so research in social science or any kind of research is about thinking and thinking. किस विषय पे रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है? The first thing that comes in our mind is that we will have to think more and more. Okay, so this is the scenario till 2014. Things have changed a little bit. थोड़ा पुराना डेटा है, लगभग 7-8 साल तो हो ही गया है, तो थोड़ा पुराना है, लेकिन बहुत महत्व रखते हैं ये रिपोर्ट. एनीवे, सो डायरेक्टली हम विषय पे जाते हैं. टॉपिक सिलेक्शन. क्रिएटिव थिंकिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो creative thinking is needed to generate new, original and unique ideas. We all know that research itself is unique. Research, whenever we are doing any research, we are adding something new in the ocean of knowledge. We are contributing something new to the ocean of knowledge. ओके, सो बहुत सारा रिसर्च हो रहे हैं चारों तरफ, बहुत सारा रिसर्च, लेकिन उनमें से भी आई विल हैव टू मेक माई कंट्रीब्यूशन यूनिक. सो हाउ कैन आई मेक माई कंट्रीब्यूशन? सो क्रिएटिव थिंकिंग, critical thinking is important. If we think critically, if we think logically, if we think creatively, then definitely we can gather some original and unique ideas. Okay, next, choosing our topic is the very first thing we all know. जब भी हम research is not something like चलो मैंने नेट क्रैक कर लिया तो अभी हमको पीएचडी करना है, बस पीएचडी करना है, वहाँ जाके सर को सुपरवाइज़र ठीक कर दिया और एक रिसर्च प्रपोजल लिख दिया और बोला कि आई वांट टू डू रिसर्च. इट्स नॉट अबाउट दैट. रिसर्च इज अबाउट पैशन. You are reading a particular subject. So, you know, in that particular subject, in which area you have feelings, you are passionate about. करना क्या चाहते हैं हम? इतने सारे डिफिकल्टीज है सोशल साइंस. इफ यू थिंक अबाउट सोशल साइंस, अब देखिए सोशल साइंस एक वास्ट एरिया है और यहाँ हजारों लाखों टॉपिक्स है रिसर्च करने के लिए. देयर आर सो मेनी एरियाज, and as I mentioned a little earlier, the quality of research in social science is not up to that mark. So we will have to think critically. If we keep our eyes and ears open, we will find thousands of research topic or thousands of research area where we can work and we can make some change. Applicability is one of the very important factor. ऐसा नहीं है कि बस मैंने अपना रिसर्च ख़त्म कर दिया, बस सुपरवाइज़र ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, फिर जाके अपना थीसिस लिख दिया, जमा कर दिया, इवेलुएट हुआ, फिर अवार्डेड हो गया, बस ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है. रिसर्च इज ऑल्सो समथिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी. whatever on which topic I am doing my research, what is the applicability, isn't it? रिसर्च तो मैंने कर लिया, लेकिन इस रिसर्च का आउटपुट क्या है? कितने लोग उस रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं जिंदगी में?
how my research is changing the society. Okay, so there are so many questions, but the first thing is that if I keep my eyes and ears open, there are hundreds and thousands of research areas where we need to explore. Okay, but at the same time, selecting this topic is not that much of easy. Okay, uh, that not easy. So it must be कैसा होना चाहिए research? It must be narrow and focused. It must be narrow and focused. Now, as I said, अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम अपना आंख और कान खोल के रखेंगे तो हजारों लाखों टॉपिक्स एरियाज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमको फोकस्ड रहना है कि पर्टिकुलर कौन से एरिया को लेकर हम रिसर्च करना चाहते हैं. पर्टिकुलर, वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी वेरी फोकस्ड. जैसा कि आप सभी जानते हो कि अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने बताया कि तुम क्या देख रहे हो, तो बोला एक आंख दिख रहा हूं, वह पक्षी का. फोकस्ड लाइक दैट. ओके, और इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए. एवरीथिंग इज अबाउट इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं भी जाकर काम करने में आसानी नहीं होगी. दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. इफ द रिसर्च एरिया इज नॉट इंटरेस्टिंग, तब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. रिसर्च वर्क बोरिंग सा लग जाएगा और काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा. तब जाके लगेगा कि अरे चलो कुछ भी लिख के जमा कर देते हैं, बस हो जाएगा. इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो ऐसा होने का बहुत सारे संभावनाएं हैं. ओके, सो हाउ टू सिलेक्ट द राइट रिसर्च टॉपिक. ओके, वन थिंग, this is not a mere lecture. This will be a discussion method. Okay, if the participants participate while I am interacting, that will be good. Okay, so ऐसे 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 हम डिस्कस करते करते एक रिसर्च टॉपिक भी ठीक कर लेंगे. ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सभी को एक रिसर्च टॉपिक बोलना है. ठीक है, all of you will have to say a research topic. So think about it. Okay, लेक्चर जैसा जैसा बढ़ता है वैसे वैसे आप भी थोड़ा अपने रिसर्च एरिया को लेकर सोचिए. So at the end, I would like to know your research area, okay, or research topic. Fine. So how to select the right research topic? It is one of the most important decision for any research scholar or any student or any independent researcher. Choosing the right research topic. Okay. So writing an academic paper necessitates a certain set of skills and inclination. Inclination होना चाहिए. सबसे ज़्यादा important component जो है right approach. अप्रोच कैसा रहेगा? राइट अप्रोच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. एंड डेडिकेशन. ओके, डेडिकेशन रहना चाहिए और अप्रोच, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रिसर्च टॉपिक जब हम सोचेंगे रिसर्च टॉपिक के ऊपर, एट दैट टाइम वी विल हैव टू थिंक दैट इट मस्ट बी ओरिजिनल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी ओरिजिनल, इन्वेंटिव एंड इंट्रीगिंग. इंट्रीग होना चाहिए, इन्वेंटिव, नया कुछ है, इन्वेंशन, इन्वेंटिव. ओके, बेहतर है ये कि रिसेंट एंड टाइमली. देखिए, वी ऑल नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च. वी कैन डू रिसर्च ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स. ऑफ कोर्स इन हिस्टोरिकल इवेंट्स वो जैसा है, लेकिन जो रिसेंट है और जो टाइमली है एंड विच इज़ कंटेम्पोररी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच हैज़ सम एप्लीकेबिलिटी इन अवर लाइफ, इस तरह का रिसर्च रहना बहुत ज़रूरी है. लुक, वन थिंग दैट इज रिसर्च इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग द PhD.
research is not only about writing a research paper to gather API marks. Research, there are many researchers, those who write research and they submit it to different funding agencies. So when I am writing a research proposal, at that time I need some grant, I need money to do the research. So when I am applying to any funding agency, what they will see? They will see this applicability, recent and timely, inventive, intriguing, original, इन सारे चीज़ों को वो लोग देखेंगे. If they are satisfied with everything, then they will grant the financial help. Okay. So another, suit your specific needs. See, research ऐसा भी नहीं है कि हमको बस एक फंडिंग एजेंसी से फंड लेना है और रिसर्च करना है, ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट पहला है सब्जेक्ट में. माय बेसिक मोटो or my basic love is for the particular subject. When I am trying to do my research work, at that time when I am facing the financial constraints, at that time I am sending my research proposal to the funding agencies. Now if the funding agencies are satisfied, then they will grant the money, and with that money I will complete my research work. So the focus is on the research work. Okay, so रिसर्च वर्क जब हम करेंगे तो खुद का इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि अगर हम फंडिंग एजेंसी को इस तरह का रिसर्च प्रपोजल देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. सबसे पहले खुद का इंटरेस्ट लाना चाहिए. इफ आई एम इंटरेस्टेड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आफ्टर दैट आई एम सेंडिंग माई रिसर्च प्रपोजल टू डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज. Now, if everything is okay, if all the criteria are fulfilled, then only they will grant the financial help. Okay, so interest is important here. Next, that is ignite your curiosity for research. Research curiosity. Okay, now curiosity is everything. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? These are the basic questions that should come in mind first. If this type of questions doesn't come in our mind, then I'm afraid इस तरह का रिसर्च का क्वालिटी कितना बेहतर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है. Okay, so curiosity, interest, these are the very, very key term for research work. So देखिए, अब तक का जो डिस्कशन रहा है, अब तक बस दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट. रिसर्च शुरू करने से पहले इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. इंटरेस्ट मतलब खोजना, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. थिंक अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट्स. थिंक अबाउट जॉन डाल्टन, द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी. think about Pavlov. There are so many scientists, social scientists. अपने इंटरेस्ट से जो बेसिक रिसर्च जितने भी होते हैं, बेसिक रिसर्च, most of the basic research comes from that curiosity, comes from that interest. Okay. Next, look into options, what we can do. Some steps which we can use. Okay, so make a unique study subject suggestions. Okay, unique study सब्जेक्ट सजेशन. सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, तो पर्टिकुलर एरिया में जब हम रिसर्च करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट्स को ठीक तरह से पढ़ना है. वी ऑल नो इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सो वी विल हैव टू रीड दैट in that particular area
What is the available literature? This is the most prevalent option in humanities, business and law fields of study. Okay. और सुपरवाइज़र का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है रिसर्च में. सुपरवाइज़र for the initial researchers, the supervisor can guide them on which topic they may go on. Okay, because the initial researchers, those who are entering in research area for the first time, for them it is quite difficult to find exact literature. Okay, so in that case supervisor plays a very important role. Okay, so next, early on, talk to a possible supervisor about your research ideas. So if you have any research idea, if you are doing research for the first time, so better we can talk to our supervisor. It may be supervisor, it may be some senior teachers or senior scientists, or anyone. Okay, but talk to any expert. We must talk to any expert, those who are expert in that particular field. Okay, so they will be able to guide you on which area or on which topic we can write our research proposal. Okay, now how to come up with a unique research topic? How to come up with a unique research topic? There are some tips. Number one, brainstorming. Now, brainstorming, what is this? Now, as I discussed a little bit earlier, that creative thinking, critical thinking, all these things will, they will create storm in the brain. ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, if there is any problem, how we can overcome those problems, what are the challenges. Okay, if we think about our society, okay, fine, let me ask one thing. Anyone, could you please tell me some characteristics of present Indian society? Respected participants, any characteristics of present Indian society, or any problem of present Indian society? Better to say that, yeah, problem of present Indian society. So this is a workshop, and I think there should be some discussion. Population of India. Population of India, excellent. Population of, in fact, we are the first. We became first. We have exceeded China. Still, yeah, very good. Population, it's a problem, right? Anything Gender else? discrimination. Gender discrimination. Gender discrimination, very good, man. Gender discrimination. Dropout ratio. Sorry, dropout ratio. Yes. Yeah, dropout ratio. So gender discrimination, dropout ratio, population, these are some Economic problem. economic problem. Excellent. Unequal distribution of wealth in India is very much. The haves and have-nots. Very good. Political corruption. Political corruption. Yeah, thank you, sir. Corruption. Political corruption is also there. At the same time, corruption is also there. Corruption is there among the bureaucrats, among different kind of people. Yeah, political corruption, that is also there. Yeah. Thank you, sir. Biasness and prejudices. Sorry, ma'am? Sir, biasness and prejudices. Biasness and prejudices, yes, that is also there. In the professional ethics given by NCTE, there it has been said that all the teachers should treat his students equally. But unfortunately, in our everyday classroom, we see there are prejudices, there are biasness. Yeah, that's true. Anything else? Any other participants? If you are from different state, आप अपने स्टेट के बारे में भी बता सकते हैं कि आपके स्टेट में किस तरह का समस्या है.
आप ये भी बता Caste सकते हैं. based issue in backward area. Sorry, caste. Yeah, casteism. Caste के issue जो Casteism. होते हैं, lower हाँ हाँ, caste, higher caste in backward बिल्कुल. area, most probably in backward area. Exactly, exactly. Yes, yes. Thank you, ma'am. This is another important issue. We are living in 21st century. Still, there are different areas where people still believe, not only believe, but firm believe in casteism. Yeah, that's true. It's a great problem. Yeah. Thank you, ma'am. Any other participants? आपके स्टेट में अगर कोई यूनिक से प्रॉब्लम है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं. Okay, fine. Thank you, respected participants, for sharing so different areas. Okay, so देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कास्टिज्म, जेंडर बायसनेस, करप्शन, these are huge area. If we want to do research on a particular topic, we will have to narrow down our topic. We will have to make our topic more focused. Employment, yes. Employment, that is another important area. Unemployment, one problem of our society. That's true. Yeah. So इन सारे चीज़ों के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे, तो हमको स्पेसिफिक होना है, फोकस्ड होना है, पर्टिकुलर एक जगह को लेकर हमको रिसर्च करना है. Okay, so I would like to request respected participants, जैसा कि आपने एक एरिया को ढूंढे हैं, उसी तरह आप इस एरिया में एक रिसर्च टाइटल बनाइए. Okay, think please about this area, और at the end आप एक रिसर्च टाइटल बनाइए, ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें उस टाइटल को लेकर. Okay, so brainstorming. Again, we are coming back. Brainstorming मतलब critical thinking and thinking. Education of children with special needs. Yes, another important area. Special needs, differently abled बच्चों in the context of inclusive education, especially children with special needs, उनके education के बारे में बहुत सारा research होने का संभावनाएं हैं. Okay, so let's come back to the brainstorming session. Ask yourself the following questions. Okay, there are some questions in front of your screen. See those questions. Do you have a strong opinion on current social or political controversy? सोसाइटी में जितने भी सारा कंट्रोवर्सी हो रहे हैं, क्या आपका कोई ओपिनियन है? कैसा ओपिनियन है आपका? What kind of opinion that you have? As a researcher, as a social science researcher, I will have to keep my ears and eyes open 24 hours. Whatever is going in our society, crime against women, crime against child, corruption, बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में इस वक्त चल रहा है. करना क्या है? What is my role? Corruption in different sectors. There are different sectors. करप्शन चल रहा है. शैलेंद्र कुमार जी ने बताया कि पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ पॉल्यूशन का इफेक्ट तो हम लोग झेल रहे हैं एवरी डे. Few days back, the temperature of in Kolkata was almost 42-43 degrees Celsius. Yeah, climate change, Shailendra ji, bilkul. Climate change, things are changing. Okay, yeah. So whatever is going in our society, am I aware of everything? You know, social science is a very interesting area. You know, each and everything is interlinked. Each and everything is connected. Ukraine war, that is connected to our social life. You think whatever topic, you know, everything is related to our life. Each and everything is related to our life. Terrorist attack in London, that will affect my everyday life.
This is the age of globalization with enormous facilities of information and communication technology. Now, everything is related. Now, Westernization related to my everyday life. Sanskritization related to my everyday life. What not? Now, each and every issue is related to our everyday life, directly or indirectly. Okay, so we will have to be aware about the things going in our society. Okay, second question, do you read or see a news story recently that has interested you? So, there are thousands of incidents are going on every day. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हजारों में से हजारों में ही मेरा इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट तो सिलेक्टिव होते हैं. सो जितने भी सारे घटनाएं चल रहा है, सो मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? सो द सोशल हैपनिंग्स, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? ओके, नेक्स्ट, do you have a personal issue, problem or interest that you would like to know more about? See, curiosity. This is about curiosity. Whatever that is going in our society, do I have my personal issue, problem or interest that I want to know more and more? The thing this is that I want to know more, that is curiosity. And if I have that level of curiosity, then yes, I have primarily fulfilled the basic criteria of doing a research. I have seen in my life that there are so many people have done their research work, but they have less interest on that topic. It's simply because of the supervisor. Supervisor told that you will have to do research on this particular topic, and simply they accepted that. And after 1 month or 6 months or 1 year after that, they say, I'm not getting interest, I don't know what to do, I'm bored with this research work and I don't know what to do. So it happens. So the first thing is that interest को लाना बहुत ज़रूरी है. If I don't have interest, problem हो सकता है. Okay. Next, is there any aspect of one of your classes that you would like to learn more about? See, want to learn more about itself is about curiosity. Itself is about curiosity. और क्या मैं थोड़ा ज़्यादा जान सकता हूँ? कैसे जानूँ? From where I can get the information? I can ask my friends, I can ask my supervisor, I can gather information from internet, from OER, Open Educational Resources. Okay, so first of all, if I have interest, then if I have curiosity, then I will gather information. Doesn't matter from where, but I will gather information. In Bengali, there is a very, very, very nice proverb. They said that if you have interest, then the ghost will give you the information. Okay. If I am interested on a particular topic, then the ghost will provide me all the information. Yaha ghost, that has been used symbolically. The thing is that I will gather information. Okay. Next, that is, find a subject that interests you by reading a variety of material. So research करना है हमको particular area में, so I will have to read, that is review of literature, that is the part. I will have to read more and more to gather information, to gather interest, to arouse interest. Okay, become completely immersed in journals, articles and this related to your field. So from where we can get knowledge, or from where we can gather information. और ऐसा हो सकता है कि मैंने अपना रिसर्च काम तो शुरू तो कर दिया, लेकिन ठीक तरह से पढ़ा नहीं, तो अचानक 6 महीना काम करने के बाद मुझे पता चला कि अरे भाई इस विषय पे तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं. So all my 6 months will be
वेस्टेड। ओके, सो रिसर्च शुरू करने से पहले हमको बहुत अच्छी तरह से उस विषय पे, उस फील्ड पे जितने भी सारे वर्क्स हो चुके हैं वी विल हैव टू रीड प्रॉपरली। और आजकल के ज़माने में तो इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबल, आर्टिकल्स अवेलेबल, शुद्ध गंगा इज देयर, थीसिस अवेलेबल, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, सो डिजिटल लर्निंग आने के बाद तो बहुत इजी हो चुका है सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना कि ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक what are the works that has been already done. That is why I will have to read journals, I will have to read articles, I will have to read books. Okay, so बहुत ज़रूरी है रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज करने से पहले, रिसर्च टॉपिक रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कहीं भी कोई आर्टिकल पब्लिश ना हुआ हो और इस आर्टिकल को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल रिसर्च क्वेश्चन, बी डिटेल्ड, यूनिक एंड रियलिस्टिक। रिसर्च टॉपिक देखने से पता चल जाएगा कि एक्चुअली किस विषय को लेकर रिसर्च करना चाहते हैं। Okay, then make an effort to be adaptable. Some of your initial ideas are likely to be changed. This is a very common factor. At first, when I am sending my research proposal for the PhD registration or PhD interview, when I'm giving my research proposal, this is a very normal case. बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि जो research proposal हम लोग देते हैं initially, that goes थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनिशियली तो एक सोच लेकर हम काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे कि जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आई विल गैदर नॉलेज मोर एंड मोर, आई विल गैदर नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई विल सी फाइनली कुछ जाकर कुछ और भी हो सकते हैं। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होने के साथ साथ चेंजेस भी आ सकते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत रिजिड रहना चाहिए, नो। एक कैरेक्टरिस्टिक जो है रिसर्च का, वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। देन वी मस्ट मेक श्योर दैट वी आर अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट advances in my area. Okay, in my area अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने तो बहुत अप टू डेट काम कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अप टू डेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 6 महीना काम करने के बाद ये पता चलेगा कि इस विषय पे तो काम हो चुका है। सो रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज करने से पहले बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से हमको देखना है, रिव्यू करना है बहुत अच्छी तरह से कि लेटेस्ट डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है। ओके, नेक्स्ट, टॉक टू अवर फ्रेंड अबाउट रिसर्च आइडियाज़, या वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स जो आपका आइडिया चुरा ना ले। ठीक है, इस विषय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आई मे टॉक टू माई फ्रेंड्स विथ माई रिसर्च प्लान, रिसर्च आइडियाज़, बट विल हैव टू कीप इन अवर माइंड कि आपका जो रिसर्च आइडियाज़ जो है वो चुरा ना ले, क्योंकि एकेडमिक्स में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि व्हेन आई एम शेयरिंग माय रिसर्च आइडियाज़ विथ समवन, once fine morning I can see that it has already been published. Okay, so ध्यान से बात करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड के साथ या सुपरवाइज़र के साथ या एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि नैरो डाउन करने में बहुत हेल्प करते हैं। इनिशियली जब हम रिसर्च करते हैं तो कभी कभी खुद को ही पता नहीं चलता है कि मैंने ठीक तरह से फोकस्ड किया कि नहीं।
when in one of the class, one of our teachers said that write a research topic. तो मैंने तो लिख दिया एक रिसर्च टॉपिक. अब मुझे लग रहा है कि अरे मैंने तो एक बहुत बढ़िया सा रिसर्च टॉपिक लिख दिया, ये तो बेसिक रिसर्च है. तब जाके मैंने अपने सर को कहा कि सर दिस इज़ दैट टॉपिक, और मन ही मन तो बहुत खुश हो रहा था कि मैंने तो बहुत बढ़िया सा एक रिसर्च टॉपिक लिख दिया. देन माई टीचर सेड दैट ओके फाइन, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज इट. मैंने कहा कि दिस इज अ बेसिक काइंड ऑफ रिसर्च. देन ही सेड नो, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो मैंने सोचा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, मैंने तो बेसिक सोचकर ये किया था. तो इनिशियली जब हम रिसर्च करने जाते हैं उस वक्त खुद को ठीक तरह से पता नहीं चलता है, तो इसीलिए एक एक्सपर्ट के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है. दे कैन शो अस द एग्जैक्ट वे. ओके, और फिर एक वही टॉपिक दैट इंटरेस्टेड इन. जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. देन नैरो योर टॉपिक टू सम मैनेजेबल. तो टॉपिक कैसा होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए. जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया कि करप्शन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो एजुकेशन है वहाँ प्रॉब्लम है. सो यू हैव डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी ब्रॉड एरियाज. सो ब्रॉड एरिया को लेकर तो हम रिसर्च कर नहीं सकते, दैट इज नॉट फिजिबल. तो रिसर्च करना चाहिए ऐसे टॉपिक में जो कि स्पेसिफिक हो, छोटा हो. देखिए जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमको लगता था कि बहुत कुछ जानते हैं हम, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं. हम ज्योग्राफी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, दूसरा लैंग्वेज जानते हैं, लाइफ साइंस जानते हैं, फिजिकल साइंस, बहुत कुछ जानते हैं. फिर जाके एचएस में गया, एचएस में स्पेसिफिक हो गया, मोर स्पेसिफिक, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एनी अदर स्ट्रीम. जब हम ग्रेजुएशन करने गए सब कुछ छोड़ दिया, बस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है. साइंस में तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. आर्ट्स में तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स है. तो ग्रेजुएशन जब हम ऑनर्स करने गए और मेजर करने गए उस वक्त क्या है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ें, इंग्लिश लिटरेचर, बस और कुछ नहीं पढ़ना है. खत्म हो गया ग्रेजुएशन. मास्टर डिग्री में एक स्पेशलाइजेशन पेपर था, तो ठीक है इंग्लिश लिटरेचर है तो फिर स्पेशलाइजेशन पेपर क्या लेना है, चलो ठीक है अमेरिकन लिटरेचर ले लिया या यूरोपियन लिटरेचर ले लिया, स्पेशलाइजेशन हो गया मास्टर डिग्री में. फिर जाके आ गया पीएचडी, अभी तो रिसर्च करना है. और मास्टर डिग्री में डिसर्टेशन भी था. डिसर्टेशन में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है कि कैसे करना है, टॉपिक सिलेक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है. फिर जाके चले गए पीएचडी में. पीएचडी में जाकर और भी स्पेसिफिक, और भी स्पेसिफिक, और भी फोकस्ड. सो ऐसे ऐसे करके पर्टिकुलर एक ही टॉपिक में स्पेशलाइजेशन करना है. ओके, नेक्स्ट, background reading can help you choose and limit the scope of your topic. So background reading or review of literature, जैसा कि हम we use the term review of literature. Okay, it helps to limit my work. Okay, next, www स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. कैसे, why did you choose the topic? Ask yourself, why I choose this particular topic? What interests me about it? If people ask you these questions, that why did you choose this topic? What interests you about it? Do you have any opinion about the issue involved? अगर इस तरह का क्वेश्चंस कोई पूछता है, हमको आंसर देना है. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि इफ आई गो विथ एनी रिसर्च प्रपोजल टू एनीवन, the very first question that the experts ask, why did you choose the topic?
ओके, सो अगर आंसर ऐसा होगा कि मैंने सुपरवाइजर से बात किया, मेरा सुपरवाइजर ने कहा कि इस टॉपिक को लेकर करना है, तो क्या होगा? They will give you admission. No, in most of the cases they will not give you the admission. Okay, so this is what you feel, this is your opinion, why you choose this topic, this is your feelings. Okay, next, who are the sources of information on this topic, from where I can get information. Now the next question that may the interviewers may ask you that yeah, this is a very good topic, but I don't think that you will get enough data. From where will you get data? Okay, so we will have to be very clear about the sources of information, from where I can get data. Okay, next, who might publish information about it on a particular topic? Who might publish information about it? From which journal we can gather information on this particular topic? If you see different journals, in many cases the journals are basically subject specific. Journal of Education, Journal of Psychology, Journal of Sociology, okay, Journal of Business Management. So specific areas are there. So who might publish information about it? Who is affected by the topic? Yes, this is very important. The topic on which I am working, or I want to work, where is the applicability? इस टॉपिक को लेकर अगर हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने के बाद अप्लाई कहाँ करें, या अप्लाई हो सकते हैं या नहीं? Do you know of organization or institution that are connected with the topic? पर्टिकुलर इस विषय को लेकर स्पेशलाइज्ड है कोई इंस्टीट्यूशन और कोई डिपार्टमेंट? Is there any institution or department like this? From where you can gather data, from where you can gather or you can design your research methodology. Okay, so why, who, 2W, and next WWW we have what. What are the most important question about this topic? Okay, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप सब एक रिसर्च टॉपिक को रेडी करके रखिएगा. सो इन सारे क्वेश्चन आई विल आस्क दिस क्वेश्चंस. ओके, ट्राई टू गिव द आंसर्स. ओके, सो you also think from this point of view. Okay, so what are the most important questions about this topic? Is there a debate regarding this topic? इस टॉपिक को लेकर कोई डिबेट है? Is there a wide range of subject and viewpoints to consider? Viewpoint is very important in social science research. You know, 360 degree viewpoint से देखना बहुत ज़रूरी है. 360 डिग्री से देखना है, और व्यू फ्रॉम ईगल आई, ऊपर से देखना है. ईगल जैसे देखते हैं ऊपर से, ईगल आई जैसा देखना है, ताकि पूरा व्यू बहुत अच्छी तरह से नजर आए. ठीक है. सोशल साइंस रिसर्च पर्टिकुलर वन वी कैन नॉट डिस्कस फ्रॉम अ पर्टिकुलर ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो शायद गलत हो सकते हैं. ऑल ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ सम visually impaired there are some 3 or 4 visually impaired people. Those were talking about the elephant. They have touched and this one say that elephant किस तरह दिखते हैं. तो किसी ने कहा कि इट्स लाइक अ ट्रंक, बस एक पेड़ की तरह है, क्योंकि उसने वो एक पैर पकड़ के देखा था. किसी ने उसका ट्रंक पकड़ लिया था तो उसने कहा कि एक सांप जैसा है. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट.
we will have to see from 360-degree angle. Okay, next, where does your topic matter most? Where does your topic matter most? At the local level, at the national level, or international level? Okay, so, excuse me, antivirus आ गया कहाँ से? Anyway, where does your topic matter most? Local level, national level, international level, कहीं भी, whatever it is, where it is affecting. And the last one is when. When was your topic important? Is this a current issue or one from the past? Okay. Do you want to compare your topic by time period? Comparison हो सकते हैं. Comparative education में pre independent, post independent education sector में हम compare कर सकते हैं. Okay. And the most crucial part is to keep you motivated during the journey. Yeah. See, if I want to get a degree like PhD, so we'll have to work almost for 3 to 5 years. Okay. If I'm an independent researcher, or I have applied for fund and the funding agencies approved my research proposal, so I will have to work maybe for 1 year, 2 years. Okay. Now the thing is that we will have to be motivated during the journey, during this research work. In many cases we can see, rather I can say you that I have seen that people get demotivated. In most of them, there are so many scholars demotivated हो जाते हैं. What I feel is that in many cases there are several factors. We cannot bind it within 1 or 2 factors. There are several factors, but one factor is very important, that is interest. That is interest. I have seen in my life most of the researchers, those who are demotivated, in most of the cases they have selected the research area on the words of the supervisor, okay, or their mentor, in many cases. I'm not saying in every cases, but in many cases. Okay, so motivated रहना बहुत ज़रूरी है. And another thing is that keep the excitement on. Excitement कैसा है? अरे कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा. If you have seen the movie Three Idiots, remember the dialogue? आज कुछ नया सीखने को मिलेगा. Okay. So this excitement is important. Research is all about excitement. If I am doing the research in a proper way on the topic where I have interest, so excitement should be there. Though a little bit of tough after 1, 3, 4 years, maybe there are some issues, but we will have to keep this excitement on. Okay, otherwise it will be very difficult to continue the journey. Okay. Converting ideas into research. Yeah, now directly we are coming to the research topics. Okay. So how we can do this or finalize our research topic? First of all, we have several ideas. Our brain is a storehouse of ideas. There are hundreds of ideas are there. Okay, so we will have to convert these ideas into researchable topics. Okay, particular area is there. After that, again particular area. Okay. Now this process involves the following: not necessarily linear state, topic of interest. Choose potential topic of interest. Again the same thing, so that researcher continues being motivated to successfully overcome problems that are generally encountered in the course of study.
जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल 4 साल या 5-6 साल इतनी दिन तक मोटिवेटेड रहना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, एक्साइटेड रहना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बट इफ़ आई हैव इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तब जाके जब वो फाइंडिंग्स आएगा रिसर्च करने के बाद मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, सो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ये रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, टॉपिक्स एप्रोप्रिएट टू द डिसिप्लिन एंड माई नॉलेज, माई डिसिप्लिन, माई इंटरेस्ट। ओके, सो अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्चेस भी हैं अभी। तो रिसर्च इज़ नाउ एनकरेज विद इन द स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड सेट बाय द इंस्टीट्यूट। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी हो सकते हैं अभी। Narrow down the broad topic to a specific topic. So narrow down the broad topic, a huge area. We will have to narrow down to a specific topic. ठीक है? If you see the research title, if you go through Shuddh Ganga or any other site, if you Google it, then we will be able to see that they are doing research on a particular, a specific area. ब्रॉड नहीं है। इफ अगर रिसर्च टॉपिक बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ओके, सो ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल रिसर्चर to gather and complete the work properly. Okay, so specific होना बहुत ज़रूरी है। If the topic is too broad, the researcher will end up writing only in general and likely to go deeper into problem due to limitation of time and resources. Okay, time and resource की वजह से वो जनरल जैसा नोट्स जैसा हो जाएगा, रिसर्च नहीं होगा। Okay, so the topic is too narrow, it becomes difficult to find adequate literature. बिल्कुल नैरो अगर हो जाएगा तो एडिक्वेट लिटरेचर मिलना बहुत मुश्किल है। और वी नो दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. I will have to see the works that has been done previously, and I will have to identify the research gap between the works done and the work that I am going to start. So between this the research gap, so इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा if the research topic is too narrow. Okay, it is necessary to narrow down the broad topic into a specific topic that is suitable for research. Okay, broad area को specific करना है. Then feasibility of the study. Research topic तो हम लोग कभी-कभी ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि feasible नहीं होता है काम करना जैसा लायक नहीं होता है इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए. It becomes very difficult for a particular individual to complete the task. Okay, maybe the research topic is very good, but feasible नहीं है, क्योंकि when I am doing my PhD without fellowship, so research करने के लिए तो थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है. So कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि feasible नहीं होता है मैन पावर की वजह से, फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस के वजह से, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ की वजह से. ओके, सो फिजिबिलिटी जब हम रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उस वक्त हमको इन सारे चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. वी मस्ट थिंक अबाउट all these probable constraints while doing the research work. Then research studies are time bound, so I will have to complete my research studies within 3 years, 4 years or 5 years. Okay, काम तो ख़त्म करना है. So ऐसा काम नहीं लेना है जो कि बहुत साल लग जाएंगे. We must not take this kind of research. Yes, those who are independent researcher like Pavlov or there are so many researchers are there. Those who have devoted their lives, Isaac Newton, or the hundreds of thousands of researchers are like that. Okay, so they have अपना जिंदगी दे दिया साइंस और रिसर्च के लिए. सो कभी-कभी कोई रिसर्च कंप्लीट करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. वी आर टॉकिंग अबाउट
particular things. Okay, we are talking about these things where when we are getting enrolled into PhD or when we are writing a research paper for a seminar conference. Okay, next, uh, in one of our project, the principal equipment did not work and we lost 1 year in procuring, repairing equipment. Okay, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है. As a result, the project was completed in 4 years instead of 3 years. So ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. फिनेंशियल एस्पेक्ट वो भी हम ध्यान में रखना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसा नहीं है बस काम ख़त्म, अब काम नहीं आगे बढ़ेगा, डेटा कलेक्शन करना नामुमकिन जैसा हो गया. सो इनिशियली जब हम रिसर्च में जाते हैं, जब हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो इस फिनेंशियल विषय को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी ऐसा लगता है यार दिस इज़ एक्सेलेंट रिसर्च टॉपिक दैट आई हैव सिलेक्टेड, लेकिन इस विषय पर हमने सोचा नहीं है. तो मुझे तो अभी अभी लगा कि ये बहुत ही बढ़िया सा एक रिसर्च टॉपिक है, चलो सर को दिखा दिया, सर ने एडमिशन दे दिया, एक्सेलेंट हो गया. लेकिन 6 महीना काम करने के बाद पता चला कि अरे भाई मेरा तो फेलोशिप नहीं है, तो पैसा नहीं है, अब हमको डेटा कलेक्शन करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट का भाड़ा कहाँ से आएगा. अगर चलिए ठीक है किसी फंडिंग एजेंसी ने दे भी दिया, लेकिन वहाँ रहना, वहाँ से काम करना बहुत बहुत मुश्किल होता है कभी कभी. ठीक है, तो जब हम रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो इस विषय को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है. एथिक्स, रिसर्च में बहुत सारा एथिक्स है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स. रिसर्च एथिक्स एक खुद ब खुद एक आध घंटा लग जाते हैं डिस्कस करने में. सो लिटिल बिट research ethics is an essential part of a research project. Okay, and it needs to be considered particularly. So जब हम रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो एथिक्स के बारे में भी हमको सोचना है. ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, फिर और भी एथिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारा एथिकल इश्यूज़ है. सो वी विल हैव टू कीप इन आवर माइंड अबाउट दोज एथिक्स ऑल्सो. We can't ignore those ethics in research, okay, because this is very very important. ऐसा हो सकता है कि if you don't follow the ethics, your thesis may be rejected, may be cancelled, may be barred. If we don't follow ethical aspect in research, okay, so this is very important. And while selecting the title, while selecting the problem particular, we will have to keep this in our mind, ethics. Okay. Now let's something discuss about characteristics of a good research. Okay, characteristics of some good research. A good title predicts the content of the research paper. A good title predicts the content of the research paper. आपका टाइटल देखने से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या है इसमें. कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बस टाइटल देखने से ही पता चल जाता है कि इस पेपर में क्या क्या हो सकता है. When we go through Shuddh Ganga, thousands of research theses are available. First of all, what we see? First of all, we see the title. Okay, we see the title. If the title is okay, if the title is okay in the sense when I feel the title is okay, then we go through the research. Okay, so reader response, रीडर आपको ऐसा टाइटल रखना चाहिए ताकि जो पढ़ रहे हैं उसको आसानी से समझ में आए कि एक्चुअली इस रिसर्च पेपर में क्या है. ओके, वी कैन से दैट द टाइटल कंसिस्ट्स एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट, a good title should be interesting to the reader. देखिए, हम लोग जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो पहले हम लोग पढ़ते क्या हैं? टाइटल पढ़ते हैं. तो इसीलिए जब हम रिसर्च करेंगे उस वक्त भी मेरा टाइटल ठीक ठाक रहना चाहिए.
क्योंकि आने वाला रिसर्चर्स जो है वो लोग भी तो पहले तो टाइटल ही देखेंगे, तो इसीलिए हमको टाइटल ठीक ठाक रखना है. Title should be catchy, title should be interesting to the reader also. It should reflect the tone of the writer. Title should be reflect the tone of the writer. We all know communication. Communication, there is a sender, there is a receiver. The sender sends message, the receiver receives the message. Okay. The sender sends encoded message, the receiver decodes the message and give a feedback. Then that is a complete communication. Communication are two types. Communication, one is verbal communication, another one is non-verbal communication. Verbal communication, when we are using our speech organs, that is verbal communication, and when we are using our gestures, postures, body language, every kind of written format of communication, that is called non-verbal communication. Now, non-verbal communication is very important. Now, specifically when we are writing, in case of writing, how we can reflect our tone. This is an art. This is an art. Okay. Now the art is, you will have to write your title in such a way where the reader will be able to get the tone of the research paper. जैसे कि हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं ना, जब हम नॉवेल पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, उस वक्त हम लोग तो कहीं खो जाते हैं, उस स्टोरी के दुनिया में हम खो जाते हैं. जैसे कि वी आर लिविंग दैट स्टोरी. जो अच्छे राइटर है उनके बारे में ये एप्लीकेबल है. ओके, सो टाइटल ऐसा रखना चाहिए ताकि रीडर को टोन पता चले, रीडर को कंटेंट पता चले, रीडर को एंटायर रिसर्च टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता चले. ओके, it should contain keywords that will make easier to locate during a keyword search. डिजिटल लर्निंग के ज़माने हैं अभी, तो कीवर्ड भी अगर टाइटल में ऐसा कुछ कीवर्ड्स रहेंगे तो अच्छा होगा. जब कोई नया रिसर्चर सर्च करेंगे, when they will search by giving the keywords, as that your research article may come easily, they may locate your research article easily. Okay. Next, that title needs to be simple and direct. Okay. देखिए, ऐसा बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सिंपल और डायरेक्ट भी रखना है. यह तो बहुत मुश्किल बात है कि हमको टोन भी बताना है, हमको कंटेंट भी बताना है, उसके ऊपर हमको सिंपल भी रखना है और डायरेक्ट भी रखना है. भाई ये तो बहुत मुश्किल है. यस, दिस इज वेरी टफ. दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट दिस इज एन आर्ट. और वैसे भी बहुत मुश्किल भी ज़्यादा नहीं है. ओके, या इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव. जैसा कि मैंने बताया कि टाइटल देखने से ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिसर्च क्या है. इट शुड बी स्पेसिफिक, accurate, functional. Okay, specific, accurate and functional. It should be conscious, precise and should include the main theme of the paper. Okay, precise होना जरूरी है, उसके साथ साथ थीम भी रहेगा यहाँ. It should not be misleading or misinterpretive. मिसलीड करना नहीं होगा. कि जैसे कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स. टाइटल मेरा है प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स और जाके मैंने बता दिया कि प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंजीनियर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लिखा गया है बस उसी को लेकर डिस्कस करना है. ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देना है जहाँ रीडर्स मिसइंटरप्रेट कर सके. इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट. या इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी हम देखते हैं कि रिसर्च टॉपिक बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा 25-30 वर्ड हो गया. ऐसा रखना ठीक नहीं है. बस 10 से 16 वर्ड्स इज आइडियल. But लेकिन I'm not saying that I will have to keep within this 10 to 16 or 15 words. I'm not saying that, but ऐसा रखना आइडियल होगा. 12 से 16 के बीच अगर कुछ है तो अच्छा रहेगा. एक टाइटल की जैसा लगेगा. ओके, it should avoid whimsical or amusing words.
अम्यूजिंग और whimsical वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक डिस्कशन, रिसर्च पेपर, इट्स क्वाइट सीरियस. ओके, सो whimsical और अम्यूजिंग वर्ड हमको नहीं डालना चाहिए. द लैंग्वेज ऑफ द रिसर्च टॉपिक शुड हैव टू बी सिंपल. हाँ, पहले ही बताया, इट मस्ट बी वेरी सिंपल. वी विल हैव टू अवॉइड jargon. ओके, then it should avoid non-standard abbreviation and unnecessary acronyms. Yeah, important, very important. Non-standard abbreviation. Abbreviation ऐसा होता है ना, USA, United States of America, APA, American Psychological Association. These are standard abbreviation. कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि हमको चाइल्ड क्या प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स, इनके ऊपर काम करना है, तो पीटी मैंने लिख दिया, पीटी प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स मैंने खुद बना दिया, खुद का स्टैंडर्ड है एब्रीविएशन, पीटी पीटी पीटी. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड एब्रीविएशन को ही यूज़ करना चाहिए. टेक्निकल जार्गन जो है, जार्गन मतलब टेक्निकल टर्म्स. टेक्निकल टर्म, there are several subject areas. Each subject area have their particular term. Okay, each subject area have their particular term. So we will have to avoid those terms, because the common reader will not be able to understand those particular technical terms. So we will have to avoid that. Next, title should be spiced. That is, it should include setting. टाइटल को सेटिंग रखना ज़रूरी है, पॉपुलेशन रखना ज़रूरी है, इंटरवेंशन रखना ज़रूरी है, कंडीशन, एंड पॉइंट एंड डिज़ाइन. स्पाइस्ड यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन, कंडीशन, डिज़ाइन इज इम्पोर्टेंट. प्लेस ऑफ द स्टडी एंड सैम्पल साइज शुड बी मेंशन्ड if it adds to the scientific value of the title. Okay, so place of the study, if you see social science research, there you will find that sample size उतना ज़्यादा टाइटल में ज़्यादा बताया नहीं जाता, लेकिन लोकेशन तो मेंशन होता ही है in maximum cases. Okay, next, descriptive titles are preferred to declarative or interrogative title. टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव वन. ऐसा नहीं है कि बस डिस्क्रिप्टिव ही होना चाहिए, डिक्लेरेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का. ओके, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर. Later I will discuss one more thing about that research proposal. Last one, that is, make sure your research title describes the topic, the method, the sample, and the result of your study. Avoid unnecessary words and jargons that I have mentioned a little pehle se. Okay, so basically these are the things that we have discussed today. Now I would like to hear from you. As I said you that please be ready with your title. Okay, ready with your title. So I would like to request you to discuss about your title. I think most of you have already decided your title. On the basis of your title, we will be discussing on that research proposal area. Okay. So, respected participants, now it's your turn. Yeah, ma'am. Dear participants, I think already you have chosen your research proposal title, topic of your research proposal, because you have to present your research proposal on 30th April and 1st May. So whether you have, whatever title you have chosen, please write in chat box so that sir can discuss with you, and your, if any doubt is there in your proposal writing, sir will clear. So it's a good opportunity for you that sir is discussing your problem. So please write down the name of the your research area topic, please, in your chat box, please. Yes. Thank you, ma'am.
chat box. Where is the chat box? Yeah. These participants, whatever you have thought to Yes. write in your research proposal, please write at least the broad topic you write, please, so that we can start Yes. our discussion. Please write at least the broad topic. Yeah. Because you have to write. I have written already in the WhatsApp group that you have to write 5 references. You have to write objective, at least 2 objective. If there is any hypothesis, or write at least 2 research questions, and what methodology you will apply. At least you have to mention the methodology. So please write your topic so that we can discuss over here, because only one day is left. The day after tomorrow will be your presentation. I think you have ready with your topic. Yes, Jyoti Bharadwaj, Nupur Bansal, thank you for your feedback, but we need the Yes. name of the topic. Yeah, yeah, we need that topic. Thank you, ma'am. Well, Vikram sir, Vikram Tikadar sir, there is a topic, emotional intelligence and academic stress in relation to scholastic achievement of adolescent students in West Bengal. Okay, fine. That's an interesting topic. Emotional intelligence and academic stress in relation to scholastic achievement of adolescent students in West Bengal. This is a topic. So, देखिए इस टॉपिक को देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक स्ट्रेस. इमोशनल इंटेलिजेंस, एकेडमिक स्ट्रेस, इस दोनों के ऊपर स्कॉलस्टिक अचीवमेंट और क्या है, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स. नाउ सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हु इज योर पॉपुलेशन? Vikram sir. Vikram sir, please write down who is your population. Class 11, 12 student in West Bengal. Okay, class 11, 12 students in West Bengal. But from your title, it seems that all the adolescent students, we can say from class 7 or 8, from 7 or 8 to class 12 almost. So from the title, it seems that students मतलब सारे स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब. सो सर, अगर टॉपिक ऐसा किया जा सकता है कि पर्टिकुलर बोल दीजिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लाखों स्टूडेंट्स हैं ऐसे, तो इफ यू वांट टू गैदर डेटा, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सैम्पलिंग लाखों स्टूडेंट्स में से अगर हम सैम्पलिंग लेंगे 200 या 300 या 500, that will not reflect the entire adolescent students community, isn't it sir? Yes sir, yes sir. So और भी स्पेसिफिक करना है, अगर हम और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, that is more better. तो टाइटल ऐसा अगर होंगे तो बहुत बढ़िया है. Can Okay, I sir. cut down the adolescent term? Yes sir, it's up to you. See sir, if you can do it, you know, as I said na, for this kind of research you need you will face financial problem, financial constraint, time constraints, because in West Bengal there are so many districts, so many, you know, so many schools, lakhs of students are there. Okay, so it is very difficult for us, quite normal, it is very difficult for us to continue on this particular topic. Okay, now see, if you are doing a PhD research, even in that case also, the area is huge, the population is huge. Now sir, we are simply discussing whatever topic you do, you have the liberty to do. Okay, but simply seeing the topic, the interviewer will ask you this question first. There is a possibility. Okay, there is a great possibility. They will say, এরকম কাজ করা যায়, can you do this work?
if you don't have specially those scholarships. So in that case, they may ask you this question. Okay, so we need to do more specific, more particular. Okay, any other research topic? Any other research? স্যার Yes. তাহলে কি আমি ওটা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটা কেটে দিয়ে 11-12টা স্পেসিফিক ভাবে উল্লেখ করে দিতে পারি? হ্যাঁ, আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনি এরকমও করতে পারেন যে সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট দিতে পারেন, কিংবা ধরুন পপুলেশন, ইফ ইউ রাইট সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, দেন সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস means government school, private school, all the students in West Bengal reading in government or secondary in West Bengal board or ICSC board or CBSC board, whatever it is. So in title it should be clear that higher secondary students studying in West Bengal board. Even you can write in this way also. So it will be particular. Okay, so later you can also delimit the study, but normally from the title মনে হবে যে এটা কিরকম কিরকম, বাট ডিলিমিট করার তো একটা সুযোগ আছেই পরবর্তীকালে। বাট আই থিঙ্ক as today we are discussing only about title, so we must try to write the title perfectly. Okay, so you can write whatever you wish, but what should be the ideal thing? We are discussing only those things. Okay, yeah. International terrorism. Okay, Nupur Bansal madam, you have said about international terrorism. This is a topic of research. This is a term, international terrorism. Okay, but अगर research करना है तो particular we will have to take a topic ना, particular title. International terrorism के ऊपर you can write an article. लेकिन research अगर आप करेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसर्च करेंगे? इंटरनेशनल टेररिज्म बस 2 वर्ड से तो रिसर्च टाइटल बन नहीं सकता है. सो व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू? इंटरनेशनल टेररिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very 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 important, that's true, I admit that, but what kind of work you actually want to do? Can you tell us? आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नहीं ओके सर नहीं, आप बोलिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर. ओके मैम, आई अंडरस्टूड दैट, थैंक यू सो मच, बट if you discuss, that will be better for us. You don't want to discuss, ma'am? Yeah, Shritikona Ghosh, thank you for the session. Okay, fine. So आप अपना टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं. If you don't discuss your topic, then directly we will go to research proposal part. Okay, Milan Manna, comparative study of self concept and emotional intelligence level between visual and hearing impaired students. Okay, fine. Comparative study on self concept and emotional intelligence level between visual and hearing impaired students. Okay, visual, so there are 2 groups, Milan, I think there are 2 groups, right? Let me, yes sir. Okay, there are 2 groups, visually impaired students and hearing impaired students. So Yes sir. self concept and emotional intelligence level, visual impaired students का जो self concept है और emotional, so there are 4 things, right? तो Yes sir. okay, little bit complicated, but yeah, you can do, of course you can do self concept and emotional intelligence. So emotional intelligence level, self concept of self. What do you mean by self concept? স্যার সেলফ কনসেপ্ট মানে স্যার নিজের বলো, বলো। সম্পর্কে লোক মানে হিয়ারিং ইম্পায়ারমেন্ট স্টুডেন্টস আর ভিজুয়াল ইম্পায়ারমেন্ট স্টুডেন্টসদের সম্পর্কে লোকেরা মানে আদার্স পিপুলরা কি ভাবে ওদের নিজেদের সম্পর্কে। self concept
দেখো, আমি কিছুক্ষণ আগে আমার ডিসকাশনে একটা কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন। ওকে, দেখো, সেলফ কনসেপ্ট মানে কি বুঝি আমরা? সেলফ কনসেপ্ট মানে আমরা বুঝি যে আমার সম্পর্কে আমার ধারণাটা কেমন, এটা হচ্ছে সেলফ কনসেপ্ট। Yes, sir. তাহলে Yes, sir. তুমি যে বলছো যে অন্য মানুষে কি ভাবে আমাদের সম্পর্কে, সেটা কি ঠিকঠাক যাচ্ছে? ইজ ইট গোয়িং প্রপারলি? সেলফ কনসেপ্ট মিনস হোয়াট কাইন্ড অফ কনসেপ্ট ডু আই হ্যাভ অফ মাই ওন। হ্যাঁ স্যার, নিজে মানে স্যার এটা সেলফ কনসেপ্টটা ডাইমেনশন আছে। ফিজিক্যাল সেলফ কনসেপ্ট হতে পারে, সোশ্যাল সেলফ কনসেপ্ট মানে সোশ্যালি আমি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি, আমার ক্ষমতাটা কেমন আমার ক্ষমতা, অ্যাডজাস্ট করা। এক্স্যাক্টলি। সো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্য লোকে কি বলছে সেটা কিন্তু না। না না, ওটা স্যার ভুল বলেছিলাম ফার্স্টে। হ্যাঁ, ওকে। সো ইউ তো উইল হ্যাভ টু। ফিজিক্যালি আমি কতটা ফিটনেস নিজের দিক থেকে, হুম, ওকে ডিফারেন্ট ওকে, ঠিক আছে। ডাইমেনশন আছে, ফিজিক্যাল সেলফ কনসেপ্ট, সোশ্যাল সেলফ কনসেপ্ট, ইয়েস ইয়েস, দেন ইটস ওকে। ইন্টেলেকচুয়ালি। হ্যাঁ সো সেলফ কনসেপ্ট এইটা হচ্ছে আমার। ওকে, বেশ। দেন অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লেভেল। সো সেলফ কনসেপ্ট অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লেভেল বিটুইন ভিজুয়াল অ্যান্ড হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড স্টুডেন্টস। ওকে, ফাইন, গুড। বাট যখন তুমি কাজটা করবে, ইউ উইল হ্যাভ টু ডিফাইন দিস টার্মস, যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি তুমি কি মিন করতে চাইছো। ওকে, ফাইন, ইউ ক্যান ডু। ইয়েস ওকে স্যার। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে স্যার নিজের কিভাবে হুম। ইমোশনটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছি, ম্যানেজ করতে পারছি, কোনো সিচুয়েশনে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারছি Okay, ইমোশনটাকে। okay, এই Milan. এই দু- Yes, One sir. thing I must say. See, emotional intelligence. There is a standard definition of what is emotional intelligence. Okay, you cannot define some other way. Emotional intelligence in psychology, there is well-defined definition of emotional intelligence. Okay, so when Yes, you sir. will do this work, at that time, try to use those standard definitions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এমনি ঠিক আছে। ওকে, ফাইন, ভেরি গুড মিলন, থ্যাংক ইউ। ইয়া, আমিনা খাতুন, Okay, উইমেন okay, sir. এম্পাওয়ারমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ইয়া, নেক্সট, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমিনা, তুমি যদি দেখো, তুমি যদি দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলের এইটা এই 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 টপিক নিয়ে তুমি সার্চ করো, দেখবে দেয়ার আর সো মেনি রিসার্চ পেপার অ্যাভেলেবল। সো হোয়াট ইজ ইউনিক? Women empowerment is in West Bengal. The hundreds of research papers are available. Okay, so what is unique about your topic? This is important. Yes, sir. তাহলে বলো, what is unique? The women empowerment in West Bengal, that research has been done. So many research papers are available. ঠিক আছে? আমি দেখেছি এটা। তাহলে আরো স্পেসিফিক হতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি তুমি কি বলতে চাইছো। দেখো, এমনও হতে পারে উইমেন, দেয়ার আর সেভারাল ফ্যাক্টরস অফ উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। ওকে, several factors of women empowerment. So you can work on any one particular area. Think about that financial independence. Okay, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী, এম্পাওয়ার্ড উইমেন যারা, অর্থনৈতিকভাবে তারা কি স্বাধীন? অর্থনৈতিকভাবে তারা কি এম্পাওয়ার্ড? তুমি পার্টিকুলার এরকম টাইপেরও নিয়ে কিছু একটা করতে পারো। ঠিক আছে? সো simply women empowerment in West Bengal, this work has been done several times. Okay, so think about the topic uniquely and more creatively. Okay, Amina. Okay, sir. Thank you. Okay, Amina, thank you. Yeah, Gopal Pawar sir, thank you so much. Any other topic on which we can continue our discussion? Okay, for the time being, no topic. So, Should I end our session, Newton? do you want me to speak something about research proposal? If you have any research proposal as example, you can show. Okay, I can show, but right now I don't have that PPT. I will take just 2 to 3 minutes. Okay, about research proposal. Then I will conclude. Okay.
Just 2 to 3 minutes. Okay, about Okay. research proposal. I think this topic has been already done about research proposal, isn't it? Yes, I have taken a research proposal. Okay, okay. Then that's excellent. That's excellent. When you have done, ma'am, She so I shown them I few do. examples also. So ma'am, in that case, I don't dare to discuss. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, one thing more. I think there is another research topic. There is Alpana Sharma ji. Oh no, not topic. This is just Yeah. Okay, feedback. thank you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Okay. Shamosri, ma'am. So at the end, I would like to conclude my session saying once again, thank you so much, Shamosri, ma'am. Shamosri, ma'am, she's well known to me. She's my friend. Thank you, Shamosri, ma'am, for giving me the opportunity to speak on this topic here, for giving me the platform, such a beautiful, wonderful platform. Once again, I'd like to thank the principal, the administration of Siddhinath Mahavidyalaya, Vivekananda University, and another institution written over there. So I'd like to thank once again everyone, especially thanks to the participants, those who have made this platform and explained it one and discussed about different issues. Okay, so thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Newton. Thank you, Newton, for your nice presentation. You have nicely elaborated the how to choose the topic, how to select the topic, and the different dimensions we should be careful about when we are choosing the topic, the feasibility, the possibility, the research interest, the budget, finance or budgeting, the time frame, everything is important while we are choosing the topic. And obviously the background knowledge is very, very important. The theory, which theory we are going to elaborate, which established theory, on which established theory we are going to elaborate our topic. We are going to elaborate our research. That is very, very important while choosing the research topic and the research title. So it is very, very important topic for the dear participants that Newton sir has selected for you. I think this session is very, very beneficial for you to write your research proposal. That Savitri Mathur, please mute yourself. Uh, so it's very important uh, to present your paper when you are going to present your paper on the 30th April and 1st May. Your list will be prepared, those who are going to present, because we cannot allow everyone, as they do not have regular attendance in these workshop days. So only those who have joined regularly and participate regularly, they will be allowed to present their paper. Only 2 to 3 minutes will be given, as because there are lots of participants are there. I think today's Newton sir's presentation will help you to choose your subject of research proposal. Those who have not already chosen, only one day left for you. 29th April is left for you for your selection, and you have to prepare your PPT also for your presentation. So please do hurry up, and we will be appoint external examiners, evaluators for the grading. And in your certificate, your grading will be written. That will be very much beneficial for you. That certificate will be very much beneficial for you. And those who will not present, only participatory certificate they will be given, but not grading. They will not be not the grading will not be written over in that certificate. Okay, I made it very clear to the participants. So thanks once again, Newton sir, for that you have managed to speak, wasting your precious time in our college, though virtually, but still
I think the participants are enriched with your lecture, and in near future, we wish not virtually, you will come physically to our college, and our students will be benefited to your lecture face to face mode. So thank you once again, and now this is the time to thank our principal sir, principal madam, Dr. Uma Ghosh, principal Siddhinath Mahavidyalaya, and I'd like to thank Dr. Prakita Biswas, Professor of Education, Vivekananda University, and at the same time, President, Eastern Zone Center for Teachers Professional Development, CTPD India. And lastly, I like to thank the participant for your nice patience to hear, to listen this 10 days workshop so nicely, keeping yourself patience, and because in a we the teachers are nothing in an empty classroom. If there are not you, we are nothing. Thank you, dear participants, and tomorrow there will be no classes. Tomorrow you please prepare with your slides. Only 5 to 6 slides are enough for your presentation, and you will be given only 2 to 3 minutes. So be prepared for the day after tomorrow and 1st May for your presentation. So I am ending our sessions here, and thank you all. Hello. Hello. Yes, do you want to say anything? यस मैम। मैम ये जो आपने रिसर्च वाला बोला ना, उसमें हम पीपीटी बना देंगे, सबमिट नहीं करनी है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट है ताकि हम सबका सेम हो जाए। मतलब फॉर्मेट है कुछ प्रपोजल का कि ऐसे ही हम अपने तरीके से बनाए। I have already shared you the points which you have to write: the introduction, objective, research questions or hypothesis, and the methodology. Which methodology you will use the research design you may write, and the sample. I have, and the reference, 5 references I have already given. Okay, I will share again the points. Okay, ma'am. On that point, you can make only 3-4 lines. Don't go very elaborate or very explanative. Only just write the gist. Okay, because this Okay, is ma'am. we don't allow with much time. Only 2 to 3 minutes are enough to present. So because there are so many participants, so only write the gist and 2 or 3 words. The population, what are the population group, and what will be the sampling, what are the sample, and the objective. Only 2 or 3 objective you can write. Don't elaborative. Okay. Ma'am, So, last date of the just prepare submit the 5-6 slide and you will present. Okay, I'm ending the session here. ma'am. Hello, ma'am. Yes. Last date of submit the whole proposal. No, you don't have to. You don't have to mail the whole proposal. You just present. Online presentation is enough for your gradation. Thank Okay. you, ma'am. Okay. I am ending my session here.